Today, I'm going to discuss about the next topic of this chapter, dimension analysis. Yesterday, I'm giving the video for the what here, how can we find the dimension of the physical quantities. And in this, there are the some quantities, which one poses the dimension, means dimensional quantities, non-dimensional quantities. Dimensional quantities means ऐसे quantities जिनके dimension हो. Non-dimensional quantities ऐसे quantities जिसके dimension ना हो. जैसे कोई कहे कि एंगल डायमेंशनल क्वांटिटी है कि नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी. तो एंगल क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ ही है. तो व्हेन यू राइट आर्क अपॉन रेडियस, तो एल अपॉन एल, तो बोथ एल विल कैंसिल. सो इन दिस केस यू विल गेट नो एनी डायमेंशन ऑफ एंगल. इट मींस एंगल इज ए नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज. So here dimensional quantity means which possesses some dimension. Non-dimensional quantity which has no dimension. Some dimensional constant, कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनके डायमेंशन होते हैं. जैसे आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F is equal to G m1 m2 upon r square. और actually G is gravitational constant. But this gravitational constant is what a dimensional constant. Dimensional constant means इस G का dimension होता है. तो some constant is dimensional constant, some is non-dimensional constant. So in this way you can see there are physical quantities, dimensional, non-dimensional, some constant, dimensional constant, and someone is non-dimensional constant. Actually here I want to tell you, in dimension is only work with the unit. ये सब केवल यूनिट के साथ वर्क कर रहे हैं. And unit, you know very well about this one. All the physical quantity is possessed some unit if it has. Otherwise, if the constant, some constant is also possessed the unit. तो जिस constant की unit होगी, उस constant का dimension भी होगा. ये आप याद रखिए. और जिस constant के लिए कोई unit नहीं होगी, उस constant के लिए कोई dimension भी नहीं होगा. Now, next is principle of homogeneity. This topic is very important for the dimension analysis. Principle of homogeneity means the quantity having same unit can be added or subtracted. उन्हीं क्वांटिटियों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी यूनिट क्या हो, सेम हो. जैसे हम कहें 10 मीटर प्लस 2 मीटर, तो दिस वन इज इक्वल टू 12 मीटर. आपने 10 और 2 को ऐड किया. कब ऐड किया? जब इनकी यूनिट क्या है, सेम है. और जब इनको ऐड करेंगे तो जो मिलेगा, दिस वन इज मैग्नीट्यूड, और जो यूनिट आएगी वो भी यही यूनिट होगी. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन सेम वे. 10 मीटर माइनस 2 मीटर, तो सिंस देयर यूनिट आर सेम, इसलिए आप 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके यहां लिखते हैं 8, लेकिन यूनिट यहां भी वही लिखेंगे. ऐसा नहीं कि मीटर माइनस मीटर या 0 मीटर, ऐसा नहीं होता. यूनिट इज नेवर सब्ट्रैक्टेड. यूनिट इज ओनली अलाउड. यूनिट सब्ट्रैक्ट नहीं होता है. यूनिट केवल ये बताता है कि इसको ऐड कर दीजिए या इसको सब्ट्रैक्ट करिए. लेकिन जैसे हम लिखे यहां 10 मीटर प्लस 2 सेकेंड, अब यू कांट से एनीथिंग, ये क्या होगा? ये तो आप कहेंगे सर 1 मीटर में है, 1 सेकंड में है, ये कैसे जुड़ेगा? तो हियर दिस एडिशन इज नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल हुआ? क्योंकि इनकी यूनिट सेम नहीं है, इसलिए होमोजेनियस नहीं हुए. आप क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओनली दोज क्वांटिटी बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हुज यूनिट इज सेम. और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी उनकी यूनिट क्या आएगी, सेम यूनिट आएगी उस यूनिट की जिन क्वांटिटियों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट किए हैं. लेकिन ऐसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं होगा. तो दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. जैसे हम कहें कि सपोज ए फिजिकल क्वांटिटी z इज इक्वल टू x प्लस, कोई फिजिकल क्वांटिटी है z इज इक्वल टू x प्लस y. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यू कैन से कि यूनिट ऑफ x, यूनिट ऑफ y
and unit of this z after addition, what we will get here, that unit, their unit should be same. In same way, if suppose x minus y is equal to z, then also you can say unit of x, unit of y, and unit of z should be same here. So this one is called the principle of homogeneity. Now, uses of dimension analysis. मतलब dimension का use क्या क्या है? तो its first use is what here? To check the correctness of an equation. कोई अगर फिजिकल इक्वेशन दिया गया है तो बाय यूजिंग दिस डायमेंशनल एनालिसिस और बाय यूजिंग दिस डायमेंशनल मेथड वी कैन चेक हियर कि द गिवन इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग, दिया गया इक्वेशन गलत है या सही है. तो हाउ कैन यू चेक इट? फॉर दिस पर्पस, यू नो, इन एनी फिजिकल इक्वेशन one term is in the left hand side and one term in the right hand side. So to check the correctness of that equation, first you will find out the dimension of the term which is in left hand side. जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है उसका डायमेंशन निकाल दीजिए, एंड अगेन यू विल फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ द टर्म विच इज इन द राइट हैंड साइड. इफ द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड आर इक्वल, then you can say the given equation is correct, otherwise not. So in this way you can also check the correctness of an equation. For example, suppose we want to check this equation t is equal to 2 pi root L by G. Suppose you want to check the correctness of this equation. ये equation गलत है या सही? हाँ, इसको हम check कर रहे हैं by dimensional method. But remember this here, 2 pi is constant. And dimensional method does not give any information about the constant. इस constant का कोई dimension नहीं है, ये बात. So there is one term in the left hand side which is what here, t, and right hand side root L by G. All of you know the time period of a simple pendulum. आप लोगों ने class 9 में पढ़ा होगा. T is equal to 2 pi root L by G. So here you write L H S, left hand side. What is the term in the left hand side? T. T means time period, and its dimension is what here? And in the right hand side, what term is there? No need to take 2 pi. 2 pi is constant. Here root L by G. Right hand side term is root L by G. Root L by G means, then you will write the dimension. L means length. Effective length of the pendulum. Its dimension is L. And what is G? G is acceleration due to gravity. So it's not matter this is acceleration of a body or acceleration due to gravity. Its unit is meter per second square. And when unit is meter per second square, then its dimension is LT to the power minus 2. जो acceleration का होता है dimension, वही dimension इसका होगा G का. Because this one is acceleration due to gravity. Gravity के कारण acceleration है. So its dimension is L t to the power minus 2. And now this L is cancelled by this L. And what you will get in the square root, this t to the power minus 2 you transfer here, then this becomes t to the power 2. And t to the power 2 means what here? Then you will get here F2t. And now you see here, left hand side dimension is t, right hand side also the dimension is coming t. So here you will write, since dimension of LHS is equal to dimension of RHS, so the given equation is correct. इसलिए क्योंकि दोनों तरफ का डायमेंशन बराबर आया, इसलिए आप कह सकते हैं कि दिया गया इक्वेशन क्या है, करेक्ट है. तो आई एम गिविंग वन मोर इक्वेशन. नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल हियर. ऑल ऑफ यू नो इक्वेशन ऑफ मोशन. तो एनी इक्वेशन ऑफ मोशन यू कैन टेक. सपोज आई एम टेकिंग हियर फर्स्ट इक्वेशन, v is equal to u plus at. I hope maybe all of you familiar with this term. V is velocity, final velocity, u is initial velocity, a acceleration, and t is time. तो इट्स नॉट मैटर कि फाइनल वेलोसिटी है कि इनिशियल वेलोसिटी है, ओवरऑल क्या ये वेलोसिटी.
तो वेलोसिटी के लिए डायमेंशन lt to the power -1, चाहे वो इनिशियल हो या फाइनल हो. So if you want to check the correctness of this equation, then first write down LHS, left hand side. Left hand side is what here? V. V means velocity, final or initial, it's not matter. It's a dimension lt to the power -1. Left hand side. Right hand side here, how many term? 2 term. So separately first we'll find out the dimension of this term and dimension of this term. हमने भी बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उन्हीं क्वांटिटियों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसकी यूनिट सेम हो. इसका मतलब यूनिट ऑफ u, यूनिट ऑफ at और यूनिट ऑफ v, ये सब क्या होंगे? सेम होंगे. अगर इनकी यूनिट सेम होगी तो इनका डायमेंशन भी सेम होगा. अब देखिए RHS, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, बट है तो वेलोसिटी ही, इसका भी डायमेंशन क्या होगा? lt to the power -1. What is the second term in the right hand side? at. Don't think only a or only t, no, this one is at together. So a is acceleration, it's a dimension lt to the power -2, and this t. So when you will multiply, you will get lt to the power -2. You know, t to the power -2 into t. So this becomes t to the power -1. I hope maybe all of you know how you will get -2 plus 1 to -1. And now you see LHS is equal to RHS, means dimension of left hand side and dimension of each term in right hand side. Dimension of u, dimension of at, all these are same. Then you can say the given equation is correct. लेकिन मान लो v और u का डायमेंशन तो सेम था, at का डायमेंशन बराबर नहीं आता, तभी इक्वेशन गलत हो जाता. ये तभी सही है कि जब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन द राइट हैंड साइड इज व्हाट हियर इक्वल. So in this way you can say we can check the correctness of any equation by the dimensional method. Sometimes suppose if any equation is given in the exam and you are not sure about this one, this equation is right and wrong, so on that time you can check it here, if that equation is correct or not by using the concept of the dimension. So dear student, today you go through this one here, since only the 2 topic more in this chapter, means to convert the unit from one system to other system, and second one is what here, to establish the relation among the various physical quantity by using the dimensional method. But today you go through this video and also from your book here some question is given here to check the correctness of that equation. So please you go through and you solve how can we check the correctness of this equation, and to solve such type of the problem, time to time please you see the dimension which is given in the list, which is given in your book here. Thank you.